So this is Ghadani, and rain is expected today. और इस वक्त that is looking towards Karachi. The wind direction is normally from my back, from the sea. The sea is that side. This is at DG Khan Cement, so you can see the limestone shed. That's the direction of the sea. And that is the rain coming in. I've heard a few rumbles of thunder, but ये आ रहे हैं. Inshallah, this is coming. Allah khair करे. It should come as रहमत. हवा जो है वो तेज़ होती जा रही है, and this looks like it's coming in. This definitely looks within minutes ये पहुंच गया है. और in a very very short while it should be overhead completely. सुबह को बादल थे, फिर आसमान साफ़ हो गया था, और इस तरह के वेदर सिस्टम्स जब आते हैं तो फिर बहुत जल्दी आते हैं. Let's give it a couple of minutes and see what happens. This is brilliant. ऐसे भी हो सकता है कि ये हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाए, ऐसे भी हो सकता है, और होता भी है, क्योंकि बारिश का कतरा भी जो है वो किस्मत का होता है. तो अगर आपकी किस्मत नहीं होती है तो ये फिर ऊपर से गुज़र जाता है, कहीं और जाके बरसता है. काफ़ी स्पीड है क्लाउड्स में, और ये कराची की तरफ जा रहा है. सो दिस इज़ कमिंग ऑफ द सी. बट नॉट completely a western wind direction. मुझे तो लगता है कि ये किसी और की किस्मत की बारिश है, अनलेस पीछे बहुत दूर तक बारिश है, वरना ये किसी और के पास जा रहा है.
कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म. जब स्टॉर्म बिल्कुल ओवरहेड होता है तो अक्सर हवा एकदम से रुक जाती है. इट्स लाइक ए थॉट कि ये बारिश किसी और के लिए है. दैट पोर्शन लुक्स अ लिटिल एंग्री, बट जो लग रहा है वो ये है कि ये ऊपर से चले जाएगा अनलेस आगे जाके हवा घूमती है, which also happens. ये सिस्टम तो ओवरहेड मेरे गुजरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. But it's a beautiful sight, and experience to be able to feel something like this, to be able to see it and to be able to feel it. जब मैंने इसे नोटिस किया और फ़ोन उठाया तो उस वक्त ये दूर थे बादल और अब ये ओवरहेड आ गए और उस साइड पे ऑलमोस्ट धूप निकली हुई थी. अब ये सिस्टम completely overhead है. It's beautiful. It's really beautiful. And an exquisite feeling.